देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम देखियो कौन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी देखियो हेडिंग दबा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी माने जो हाफ एम वी स्क्वायर अच्छी सेटा केमती आसला सेटा देखिबा बेट ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन करिया गोटे सरफेस सरफेस रे गोटे बॉल नवा अनिक रखवा बॉल टाको let's say this is the ball fine ए बॉल टा बे इनिशियल पोजीशन रे 0 रे अछि 0 मीटर माने इट्स नॉट मूविंग रेस्ट रे अछि देन एट सम पॉइंट यार वेलोसिटी कौन हम बढ़ी की at some point velocity कौन हम बढ़ी की v है जो let's say at this point velocity became v meter per second तामने 0 रू v को हेला माने कि छोटे फोर्स पड़थियो otherwise this will not happen rest of motion को आसीबो केतळे under influence of a force let's say कि force टा हेला f बोलिका let's say force केते f force जुगु से आसीला कोडी की 0 रू v meter per second और ए force जुगु acceleration हेतु स्पीड बढ़ला ना 0 थिला अपने v हेगला एक्सेलरेशन हेतिबो एसो नो आ सेटा को एठी आनिबा पई केते डिस्प्लेसमेंट करछि ना एति के डिस्प्लेसमेंट करछि राइट तो वर्क डन केते हे गेला ना f डॉट s आ जुआडे फोर्स करछि से आडे मोशन करछि तो fs cos थीटा माने सेम ही तने fs खाली थीटा डा एठी 0 थीटा डा केते 0 डिग्री नाउ टेल मी now let us represent this in form of what is force mass into acceleration from Newton's second law mass into acceleration into displacement okay now tell me okay this is fine now tell me what is 2as from equation of motion v square minus u square is equals to 2as now v is v u is 0 so v square is equals to 2as okay now we have to put this here now we have as we don't have 2 but I need 2 in this equation so what I will do बोले 2 से मल्टीप्लाई कर दो एपट सेपट बार w will become therefore w will become m 2as m 2as into half why half because 2 2 कटिबो नथिला ना तो 2 से मल्टीप्लाई कली और 2 से डिवाइड कली now tell me 2as is v square so what do we have here half mv square so what is kinetic energy एटा क्वांटिटेटिवली हला वर्क डन टा कहां से समान हला हाफ एमवी स्क्वायर संगे समान हला तमे एनर्जी जहां भी यूज करो कोन हबो ता बदल रे वर्क डन ही हबो हां श्योर तो ता माने कोन कि काइनेटिक एनर्जी जो गेन हला that is basically the work done by the body to take the body from 0 meter per second by rest to v velocity को v velocity को 0 रू v velocity को आनिया पई बॉडी टाको मोर जति की वर्क डन हला सेटा हला काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी मो कथा क्लियर बुझिला तो हमें कोन लिख परिबा देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी is equals to half mv square and what is this now work done by the body to bring the body from rest to v velocity right that's it तब नोट कर पर काइनेटिक एनर्जी मास संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अछि सो दैट इफ आई इंक्रीज द मास मोर वर्क डन बॉडी जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी जो इंक्रीज द वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बॉडी जो व्हाट डज काइनेटिक एनर्जी सिग्निफाई that signifies the how much energy is possessed by the body by virtue of its motion माने से केते जोरे मूव करछि ता भितरे केते मोशन अछि ता ऊपर डिपेंड करी के हम बाहर करछि कि ये कोन माने केते एनर्जी ता भितरे स्टोर माने केते एनर्जी ता भितरे अछि जेते जोर से मोशन थिबो ता एनर्जी सेति अधिक काइनेटिक एनर्जी सेति अधिक थिबो तो काइनेटिक एनर्जी बसे रीजन कोन मोशन मोर क्लियर ओनली मोशन motion contained by a body is described by its mass and velocity now tell me if my velocity increases by 2 times how will my kinetic energy be affected it will be increased by 4 times because it's directly proportional to v square if velocity is increased by 3 times the kinetic energy shall increase by 9 times
velocity decreases by 2 times, kinetic energy shall decrease by 1 by 4 times. Is it clear? Okay. Understand that kinetic energy mm, is always positive. Kinetic energy is always positive. Kahingi? Because mass can never be negative and velocity or square can never be negative. Velocity can be negative, but minus v square is also v plus na. So kinetic energy is always positive. Okay. Now I want a relation between kinetic energy and momentum, and this relation is important. Understand that whatever you are knowing in 11th class now, they are very important. Right now, I was teaching them magnetic effect of electrical magnetism, moving matter magnetism, centripetal force is required there, understanding of angular velocity is required there, understanding of relation between kinetic energy and momentum is required there. Getting my point? All of them are related chapters. That means the kinetic energy you are using here, you are describing it as general thing. What we will be doing in the next class, next higher classes, is that you will use the concept in a specific particular condition. For example, in a magnetic field, how the charge will rotate. There also it's rotating means there is a centripetal force. If centripetal force is there, centripetal acceleration will be there. V square bar will be applying the same NLM region study कलो forces गुड़ा को देखिए सेठी भी सेमती study करेगा पड़ेगा हमको, right? Whatever you are studying ना, you have to understand कि in physics you will be using them a lot of times. So these are the basic things ना. So now we have to find a relation between kinetic energy and momentum. Relation between अरे relation relation between kinetic energy and what? Momentum. Now tell me, what is momentum? Motion contained in a body. And what is kinetic energy? Energy possessed by the body by the virtue of its motion. So what is momentum? Motion contained in a body, right? In a ହାତଟା କେମିତି ଯିବ କାହିଁ ଆସିଛି ହାତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ହାତ ଅଛି हेलो हेलो जाओनी हाथ हाय हाय हाँ गला तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट एनर्जी कंटेन्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन माने गोटे मोशन बॉडी टे मोशन कले ता भितर केते एनर्जी अछि एनर्जी कंटेन्ड बाय अ बॉडी by virtue of its motion. Motion jogu ta bhitere kete energy asila. Now what is quantitatively what is momentum? mv, mass into velocity. Now from this I want you guys कि तमें दीटा को पटे स्क्वायर कर दियो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, you will get p square is equals to m square v square. P square is equals to m square v square. Now what is kinetic energy? Half mv square. So I need half mv square here. So what I want is p square will be equals to m v square into m. किसी प्रॉब्लम होगा अब नहीं एमती लिख पारियो आ गोटे हाफ टे एपटे सेपटे मल्टीप्लाई कले हाँ एपटे सेपटे half p square is equals to half mv square into m or half p square is equals to kinetic energy into m. Now tell me what will happen to p square? Now 2 km or what will be p? Now 2 km root over.
So this is the relationship between kinetic energy and momentum. फाइन आउ तो देखो p स्क्वायर हो गला m स्क्वायर v स्क्वायर p स्क्वायर हो गला m टा साइड रखिलो m v स्क्वायर हाफ एपटे सेपटे मल्टीप्लाई कला हाफ m v स्क्वायर पळे आसला यू पुट k देयर ना 2 टा जाके सेपटे मल्टीप्लाई हो गला 2k हो गला p स्क्वायर इक्वल टू 2k p विल बी 2km रूट ओवर 2 into kinetic energy into mass रो रूट ओवर इज इक्वल टू मोमेंटम क्लियर ओके ना ए जो मु तुमको वर्क डन बाहर कली ना एठी आउ एथरु मु बाहर कली ना काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एटा गोटे कैलकुलस मेथड रे करबा गोटे को ए सेम जिंसटा को कोई मेथड रे करिया कैलकुलस मेथड रे कि वर्क डन बाय अ बॉडी यूजिंग कैलकुलस मेथड एक कौन करबा ना w डॉट ds रो इंटीग्रेशन वर्क डन इज इक्वल्स टू f डॉट ds रो इंटीग्रेशन w इज इक्वल्स टू f डॉट ds रो इंटीग्रेशन फ्रॉम को टू को जाएंगे 0 रू ने कि s जाएंगे 0 ने कि s जाएंगे मैं को जाएंगे s कंप्लीट होगा ना s v रे कंप्लीट होची तो 0 ने कि v जाएंगे 0 ने कि v जाएंगे हाँ s तो डिस्टेंस बट s डिस्टेंस तो कंप्लीट होची v रे ना तो वेलोसिटी तो s डिस्टेंस तो कंप्लीट केबे होची v वेलोसिटी रे कंप्लीट होची ना मो कथा क्लियर तो मते को एडा चेंज करबी मु एक्चुअली ds टा को dv फॉर्म को आनेबी तो केमती चेंज करबी ना इंटीग्रेशन 0 टू v और ds टा को चेंज करिया कोथरे कहलो अच्छा मते को f को मत f what is the mass into acceleration what is acceleration dt very good dv by dt so now we will put that here तो को मिलेबो मते m dv by dt dot ds तो m ds by dt dot dv no problem m ds by dt dot dv हबनी तो मते को ds by dt कोन very good so it will become ds by dt and this will become dv then m dv into dv mv ds by dt is what v na not dv ds by dt v na v is equal to ds by dt so this will become mv dv okay now we have to integrate m will not change हमें जत्ते भी वेलोसिटी बढ़ा तमरा m टा चेंज होबनी so you will get 0 to v जाएंगे इंटीग्रेशन m बाहर पड़े असला so v dv रो इंटीग्रेशन v dv रो v square by 2 right v to the 1 plus 1 divided by 1 plus 1 1 अच्छी ना 1 plus 1 by 1 plus 1 माने v square by 2 so mv square by 2 mv square by 2 को तो को जाएंगे 0 to v जाएंगे v to 0 तो मतलब कथा को ता माने कोन करिया हमें v बदले v पके माइनस v बदले 0 पके तो व्हाट विल दिस बिकम ना हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m0 रो स्क्वायर माने 0 हेले पूरा कटि जो तो कोन मिलबो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ओके एटा क्लियर मुझे कथा को जदि मु ई 0 न नै कि अलगा किछि इनिशियल वेलोसिटी रो कहि थांदी हम कहि थांदी फाइंड द गेन इन काइनेटिक एनर्जी माने कोन करथांदी लेट्स से मु एक क्वेश्चन तुम कहूची एटा गोटे जगह रे मु एनकाउंटर करिछि सेम प्रकार क्वेश्चन कि ये ऑलरेडी गोटे वेलोसिटी v रो सहित जाउतला आउ ये एबे वेलोसिटी v को पळे आसला मु पछाली व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी what is the gain in kinetic energy the kinetic energy at this point minus kinetic energy at this point so half mv square minus half mu square that means half m whole into v square minus u square same thing will you will get if you put that here u to v so half mv square minus half mu square by 2 all that clear fine ताको हम कहि परे gain in kinetic energy clear हे गला बुझ पाइला तो एबे तुमको देखिबार अछि ये जो जगह रे कली ना जदि मते कह एटा हैला काइनेटिक एनर्जी आ एपडे हैला मास लेट्स से दिस इज काइनेटिक एनर्जी
आउ एपटे है मास तर मतलब मास रो काइनेटिक एनर्जी संपर्क कोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाफ एम बी स्क्वायर बा राइट राइट प्रोपोर्शनल हवा कथा ओके मतलब गोटे कथा को यही फॉर्मूला रे को यही फॉर्मूला रे सेटा छाड़ दियो यही जगह रे यूज करबा हम मते को पी स्क्वायर टा केता हो के टा केता हो एटी के टा एटू के केता हो पी स्क्वायर बाय 2m ताले संपर्क कौन है के एम सहित एटी जदि मोमेंटम टा कांस्टेंट जदि पी टा कौन पी टा कांस्टेंट माने कौन चेंज करछि मु वेलोसिटी कांस्टेंट रखि मास चेंज करछि पी कांस्टेंट माने पी रे मास भी थिबो और वेलोसिटी भी थिबो तो पी कांस्टेंट कर दिलो माने माने मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके सेम रहउछि बट मास टा चेंज होछि तो बुझिबा जदि मोमेंटम सेम रहउछि ता माने जदि मोर मास कमिला से अनुसार वेलोसिटी बढ़ी होतो आ जदि वेलोसिटी कमिला से अनुसार मास बढ़ी होतो बुझि परछो कोन कहूछु मोमेंटम सेम रहउछि माने जो 10 केजी बॉल टे अछि आ से 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से होछि ताले 10 के ताले मल्टीप्लिकेशन केते हला 20 तो जदि मु मास टा को 5 कर देली ताले वेलोसिटी को 4 करबी काना मते मोमेंटम एबी 20 ही दरकार तो गोटे बढ़ले गोटे कमुथो मते मोमेंटम टा सेम रहथो मोमेंटम टा कमुथो कांस्टेंट रहथो से जगह रे जगह बुझि पाल कंडीशन टा बहुत इंपोर्टेंट काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन कोन हला ना 2m बळे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m दैट मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़िले मास कम हो कमिबो तो मास कमिले काइनेटिक एनर्जी बढ़ला ताबे એટલે मास बढ़िया को लागला काइनेटिक एनर्जी कोन हला कमी गला केते बळे कंडीशन एतले मोमेंटम कांस्टेंट एटा क्लियर जदि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ताहाले मोमेंटम और मास रो संपर्क केमति आबो अंडरस्टैंड ना भल से बुझिबो जदि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट जदि कोन कांस्टेंट माने हाफ एम बी स्क्वायर कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट माने कोन हाफ एम बी स्क्वायर इज कांस्टेंट हाफ तो कांस्टेंट ही माने m और v स्क्वायर रो रेशियो सेम m into v स्क्वायर टा कांस्टेंट सेटा चेंज हो m चेंज हो पड़थो v चेंज होतो m भी चेंज होतो m भी चेंज होतो v भी चेंज होतो बट m into v स्क्वायर कोन हितो कांस्टेंट हो ताहाले एपट जदि मु कहबी मोमेंटम संगे ग्राफ प्लॉट करो कहार मास रो मोमेंटम संगे ग्राफ प्लॉट करो कहासी तो मास रो सेटा केमिति अछि ना मोमेंटम बढ़िले मास टा रूट m बळा बढ़ुछि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ मास जदि k कांस्टेंट इडी जदि k टा कांस्टेंट ताले मोमेंटम रो m सहित रिलेशन कोन राइट प्रोपोर्शनल टू रूट m ना ता माने m टा जदि बढ़िला 4 ताले p टा 2 टाइम्स बढ़ी m टा जदि बढ़िला 9 ताले p टा 3 टाइम्स बढ़िबो ता रूट ओवर भलिया बढ़िबो ता माने धीरे धीरे बढ़िबो राइट ता माने तुम ग्राफ टा किछि ए बडा मिलिबो 0 to 0 0 to 0 1 बढ़िला ये कौन हो 1 2 बढ़िला ये कौन हो रूट 2 4 बढ़िला ये कौन हो 2 9 बढ़िला ये हो 3 16 हे गले ये है जो 4 तो ये 16 हे गले भी ये 4 रे अछि हमने केमते हो 16 हे गलानी ये कोडी अछि 4 हो क्लियर जदि मास कांस्टेंट ताले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रो ग्राफ केमते आबो मास कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कोन सही बडे रूट बडे माने एटा काइनेटिक एनर्जी एटा मोमेंटम एटी मास कांस्टेंट बट ये देखिया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ना p स्क्वायर बढ़िया तो माने m टा कांस्टेंट छाड़ दियो k डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर
तामाने k 1 टाइम्स बढ़िले p केते बढ़िबो k 1 टाइम्स बढ़िले नहीं p 1 टाइम्स बढ़िले k स्क्वायर बड़ा बढ़िबो p 2 टाइम्स बढ़िले k 4 हे जिवो तो p 1 हे गला ये हे गला 1 p 2 हे गला ये हे गला 4 p 3 हे गला ये हे गला 9 तामाने किछि समथिंग लाइक दिस गुड इवनिंग तुम्हें आसना तू सकाळे अच्छा हो ध्यान दियो p1 ये 1 p2 ये 4 p3 ये 9 p4 ये 16 p5 ये 25 स्क्वायर बड़े एबे एगुडा काम करिबो केतले एक कंडीशन रे बाबा एक कंडीशनिंग टा बहुत इंपोर्टेंट कि भाई तो काइनेटिक मोमेंटम रिलेशन बार करछु काइनेटिक मास रिलेशन बार करछु मोमेंटम कांस्टेंट अछि मोमेंटम मास रिलेशन बार करछु काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट अछि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन बार करछु मास कांस्टेंट क्लियर अच्छा वेरी गुड तामाने एटी मते रिलेशन ओडा कहले ए जगह रे एटा कहार ग्राफ हैला k रो p सहित रिलेशन कोन p स्क्वायर टा k संगे समान तामाने k इज रूट p k डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट p माने k डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर k डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर p डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट k राइट एटा k आउ m रो k is inversely proportional to mass ना k is inversely proportional to mass माने k is 1 by m कोडा एडी थिबो एडा 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 k inversely proportional to m माने k direct proportional to 1 by m और एडा p और m रो रूट m तमने इसो ग्राफ ओडा ए बेसिस रे बनछि गोटे वेरिएबल आउ गोटे वेरिएबल रूट संगे हेले एवडा ग्राफ मिलबो गोटे वेरिएबल आउ जनकर या संगे हेले कोन इनवर्स प्रोपोर्शनल हेले ग्राफ एवडा मिलबो आउ गोटे आउ जनकर सहित सेम कथा दिदे सेम अछि ताले एटा कि एमटी हला एटा कि एमटी हला तुम देखो कि m टा एपटे अछि रूट टा जोटे अछि सेटा एपटे अछि आउ जो p टा सेटा एपटे अछि एपटे बट k टा एपटे अछि p टा एपटे अछि सेति में एमटी हला ए बोल रे एटा m एटा तोर p ता माने जे रूट अंडर अछि सी हला m एटी जे रूट अंडर अछि सी हला k सेति में ग्राफ एमटी अछि यार एमटी अछि अच्छा हो यार एनालिसिस कुछ क्वेश्चंस कले तुम जान पर मैं काहे की ग्राफ ता कहली सम ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस विल कम ओके जे रे भी आसीबो नीट रे भी आसीबो आ बोर्ड रे भी आसीबो बोर्ड माने तमरो नॉट बोर्ड बोर्ड बट बोर्ड माने स्कूल रे आसीबो बेसिकली गोटे कथा हला कि तमर ए ग्राफ एनालिसिस ओडा बहुत इंपोर्टेंट अछि 12th पर्सपेक्टिव रे भी तुम जानियार अछि किमिति ग्राफ काम करे गोटे जनक संगे ए स्क्वायर ग्राफ कोहला देखा जाए जनक संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कोहला देखा जाए सेति पई का एटा इंपोर्टेंट अछि नेक्स्ट हला लास्ट थिंग इज वर्क एनर्जी थ्योरम कोन वर्क एनर्जी थ्योरम मु तुम कोन कहली बाबा कि मोर वर्क टा गोटे ब्रिज भलिया ना सब एनर्जी पई कि फिर किछि भी एनर्जी यूज हले वर्क डन हबो काइनेटिक एनर्जी यूज हले भी वर्क डन हबो पोटेंशियल एनर्जी यूज हले भी वर्क डन हबो लाइट एनर्जी यूज हले भी वर्क डन हबो एंड सो ऑन राइट या पढ़ले हम गोटे कथा को एमती बुझिया दी एटा से खाली प्रूफ दे दीजिए को और टिके डिस्क्राइब करके बुझिया पड़े हमको मोर गोटे बॉडी अच्छी जी जाउची v वेलोसिटी सहित से बॉडीटा बॉडी की तार वेलोसिटी हे गला एबे त 5 मीटर पर सेकंड स्पीड जाउतला एबे सेटा हे गला 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी गला तो से वेलोसिटी जेति की बढ़िला ता जो तार काइनेटिक एनर्जी बढ़थिबो ए जो काइनेटिक एनर्जी रे गेन हिला से काइनेटिक एनर्जी रे गेन टा इज वर्क डन बाय द बॉडी ड्यूरिंग दैट मोशन एटा हला वर्क एनर्जी थ्योरम कोन कि मोरो जेते एनर्जी यूज हबो सेति की वर्क डन हबो तो मोर एठी गोटे बॉडी रे एनर्जी थिला एबे जले वेलोसिटी बढ़ला तार एनर्जी बढ़ी गला तो एनर्जी टा जेते बढ़िला सेति की वर्क डन हेतिबो सेति की बॉडी टा वर्क डन करथिबो
एटा ही वर्क एनर्जी थ्योरम कि मोर एनर्जी जेते यूज हबो मोर वर्क डन सेति हबो, राइट। एमती को लिखिबा केमती कहलो, द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द नेट फोर्स को, नॉट बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस। तमे जो क्वेश्चंस कला पर्यंत वर्क डन रे भी इंडिविजुअल फोर्स में क्वेश्चन करतलो ना कि ग्रेविटी पे वर्क डन केते, फ्रिक्शन पे वर्क डन केते, बट एबे तो नेट फोर्स पे के वर्क डन ता ही तार एनर्जी रे गेन और लॉस पे के वर्क डन हबो, माने जति की एनर्जी गेन हबो दैट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स रो वर्क डन। कना एनर्जी गेन कथा तमे कहछो ना, तो एनर्जी ता लूज बा गेन होथबो जति कुछ अलग माने आउ चारटा फोर्स पड़छ ता ऊपर, तमे गोटे फोर्स पे बाहर कलो से आउ चारटा फोर्स पे के तो एनर्जी लूज भी हे पारे, तो भूल भाल हबो ना नहीं, आउ चारटा फोर्स पे एनर्जी लूज भी हे पारे, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାହାର କରିପାରିବ ଆଉ ସେଇ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଟା ଯେତିକି ହବ ସେଟା ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ଡ ବାଇ ଦ ବଡି और एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी हबो। मोटा क्लियर। फॉर एग्जांपल तुम स्प्रिंग टाको चिपिला बेले बॉडी रे एनर्जी लॉस होची ना गेन होची, काइनेटिक एनर्जी लॉस होची, काइनेटिक एनर्जी कोन होची, हम खाली काइनेटिक एनर्जी कथा कहू, काइनेटिक एनर्जी कोन होची लॉस होची, तो एनर्जी जति की लॉस हला सेति की वर्क डन हला अगेंस्ट द फोर्स वर्क डन हला, ସେଥିପାଇଁ अगेंस्ट द फोर्स वर्क डन हला ना, ସେଥିପାଇଁ एनर्जी लॉस हला आ बढ़िला कोनटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ला, तो जति की एनर्जी लॉस हला काइनेटिक एनर्जी फॉर्म रे से एनर्जी के स्टोर हला पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म रे, राइट। जोटी से जिनसटा होउथबो ना सेटा हला कंजर्वेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, जोटी से जिनसटा होउ नथिबो ना सेटा हला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। माने जोटी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होउथबो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म रे, जो फोर्स पे स्टोर हला से फोर्स टा को हम गोटे कंजर्वेटिव फोर्स कहबा। कहा पे स्टोर हो पड़छ, ग्रेविटेशनल फोर्स पे स्टोर हो पड़छ, स्प्रिंग फोर्स पे स्टोर हो पड़छ, फ्रिक्शनल फोर्स पे तो स्टोर होनी लॉस होजी, तो फ्रिक्शनल टा गोटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, से पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म रे ताको कंजर्व करे एनर्जी को, एनर्जी लूज हो जाए हीट फॉर्म रे अलग फॉर्म, फ्रिक्शन भी कहा फॉर्म रे लूज हुए हीट फॉर्म रे, जोर घसले गरम होची ना वो फॉर्म रे लूज होची हीट फॉर्म रे। मतलब क्लियर। जोठी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुए सेटा जो फोर्स पाएंगे ताको कंजर्वेटिव फोर्स कहबा, और जो फोर्स पाएंगे एनर्जी स्टोर हुए नहीं ताको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहबा। आगो वर्क एनर्जी थ्योरम को कहू तुम डेफिनेशन पछारियो यार कोन, जति की काइनेटिक एनर्जी गोटे बॉडी गेन कला सेति की वर्क डन हला बाय द नेट फोर्स, तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी। क्लियर को लिखिबा वर्क डन by the net force is equals to gain in the kinetic energy, gain in kinetic energy of the body। एगो टिके वर्ड्स रे कहलो, वर्ड्स रे change in kinetic energy is equals to the work done by the net force। लिख दियो, लिख लो करतो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम the work done by the net force acting on a body is equal to the change in is equal to the change in the kinetic energy of the body। बॉडी रे जति की काइनेटिक एनर्जी चेंज हला सेति की वर्क डन बॉडी करची, माने वर्क डन बाय द नेट फोर्स, काइनेटिक एनर्जी चेंज जति की इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। यार प्रूफ भी करबा हम एति कथा बुझि पाइलो। चलो ए जो जिनसटा मु कहली ना एटा को थोड़ा विजुअली बुझो कोन कहूची। अदिति अदिति ओके वेरी गुड वेरी गुड।
वर्क एनर्जी थ्योरम एनिमेशन माने आमे देखिबा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव देखियार अछि ता माने आगो आमे कोन करबा ना आमे आगो बुझिबा वर्क एनर्जी रो प्रिंसिपल एनिमेशन फॉर्म रे W net is equal to del k right W net is equal to कोन नहीं ओके काइनेटिक इस एनर्जी वीडियो में हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण क्रिएट होती है। आइए काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक हैवी मेटल बॉल है जिसका मास m है और ये मेटल बॉल वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। इस बॉल के पाथ पे एक वुडन ब्लॉक को रखा गया है। जब ये बॉल वुडन ब्लॉक को हिट करता है, हिट करते ही बॉल रुक जाती है और वुडन ब्लॉक फॉरवर्ड डिस्प्लेस होता है। अब अगर हम बॉल की स्पीड बढ़ा दें, डिस्प्लेस होता है, बहुत इंपोर्टेंट ना हिट से आसिला बॉलटा आसिला इस बॉल के पाथ पे एक वुडन ब्लॉक को रखा गया है। जब ये बॉल वुडन ब्लॉक को हिट करता है, तो हिट बॉलटा डिस्प्लेस कला तो यार काइनेटिक एनर्जी लॉस हला तार बॉल रो और सेति की वर्क डन करथिबो कि ब्लॉकटा जेति की एनर्जी लूज कला काइनेटिक एनर्जी फॉर्म रे सेति की एनर्जी ताको देछि और सेति की एनर्जी नै कि तार वर्क डन करछि तमे जो फोर्स पड़ला इनटू डिस्प्लेसमेंट हला आ एठी से फोर्सटा को फोर्स हो ना अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क डन हेतिबो फ्रिक्शन यार जाउ तो यार फ्रिक्शनल फोर्स थिबो ना रेस्ट थिला बुझी परछो ए देख एठी फ्रिक्शनल फोर्स पे वर्क डन हैला बोली का से फोर्सटा हला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कानी ये जेंके रही जिवो ना बडी जो स्प्रिंगटा थांता ई चिपी बॉलटा थांता स्प्रिंगटा चिपी थांता फुणी जाई थांता ना सेडे फुणी बॉल रे माडा थांता फुणी सेडे जाई थांता सेडा कंजर्वेटिव फोर्स थांता सेडा को फोर्स थांता कंजर्वेटिव हिट करते ही बॉल रुक जाती है और वुडन ब्लॉक फॉरवर्ड रुकी गला माने कोन पूरा जीरो हो गला त माने पूरा लॉस हो गला काइनेटिक एनर्जी सब तो काइनेटिक कोड पड़ेला हबे ताले टोटल वर्क डन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल and total kinetic energy is 0 work done by the box is equals to the kinetic energy of the motion माने माड हो पूर्वरु kinetic energy of the ball जहा थिला that is equals to the work done by the box बुझला डिस्प्लेस होता है। जैसे कहले डिस्प्लेसमेंट एति की हातला केते फोर्स कहा फोर्स जो वर्क डन हला ना यार kinetic energy divided by mass of the block sorry divided by displacement work done is equal to force into displacement work done is equal to force into displacement and that is equals to kinetic energy so kinetic energy is equals to force into displacement so force is equal to kinetic energy divided by displacement एमती क्वेश्चन आसो एठो हमें कोलिजन विषय एटा कोलिजन हला नि अब अगर हम बॉल की स्पीड बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि बॉल ज्यादा इम्पैक्ट के साथ वुडन ब्लॉक को हिट करता है और साथ ही वुडन ब्लॉक पहले के मुकाबले ज्यादा डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता है। वर्क बढ़ गला kana डिस्प्लेसमेंट बढ़ गला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल की काइनेटिक एनर्जी वुडन ब्लॉक में ट्रांसफर होती है। ये एनर्जी ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। आइए अब हम काइनेटिक एनर्जी केतले बढ़े को जोर गले या मास बढ़ जाए काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन की फॉर्म में समझते हैं। एटा ऑलरेडी कर देछ राइट हाफ mv स्क्वायर एनर्जी हाफ mu स्क्वायर जहां v the change in kinetic energy equal to half mv square minus half mu square so half m whole into v square minus फाइनल वर्क डन के डिफरेंस final work done is equal to difference in the kinetic energy or change in kinetic एटा हला वर्क एनर्जी थ्योरम बुझला अच्छा गोटे मिनिट ए जो जिनसटा मु कहली यार प्रूफटा देखिबो नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स देखिबो इट्स इंपोर्टेंट हाउ ध्यान दियो यार प्रूफ देखियो हेडिंग दबा प्रूफ
ओके ओके प्रूफ पाई कि कौन कर भाभी दियो मो पे गोटे मास अच्छी गोटे बॉडी अच्छी से बॉडी रो मास है m व्हाट इज m मास ऑफ द बॉडी तार इनिशियल वेलोसिटी थिला v नॉट ये थिला what is initial velocity it is what is this v naught of the body final velocity became v कहता है final velocity of the body now tell me what is what is f force applied on the body in the direction of motion what is f force applied on the body in the direction of motion on the body in the direction of motion proof टा भी important এটা 3 marks रे पड़िबो ना state work energy theorem and proof fine मते को what is the amount of work done by the displacement ds ds displacement by केते work done हबो माने कोन बुझि परछो बॉडीटा जीवो जण संगे माड हबो जाय कि ओके ओके तो धर जिन देखिले हम एनिमेशन रे बॉल टाइम माड होला ता से वर्क डन कला से केते वर्क डन कला सेटा हम किन बार करिया ना जदि मोर ds डिस्प्लेसमेंट हला तो केते वर्क डन हबो ना स्मॉल वर्क डन dw स्मॉल वर्क डन केते हबो dw f डॉट ds f ds एटा f बाबा okay now tell me what will be dw again f is ma a dot ds what is a again dt dot
तो ମୁଁ କହୁଛି କି ଭାବିଦେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଇଡି ଅଛି ନା, ଭାବିଦେ ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ ଅଛି, work is done against gravity, work is done, that means for what, this na, this is the work against gravity, work against gravity, right? ଏଠି ତ ନାହିଁ ଉପରକୁ ଫୋର୍ସ, ୱେଟ୍ ପଡୁଛି ତଳକୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଉଛି ତାକୁ, ତା ମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ମୋଶନ ଷ୍ଟଡି କଲି, ତା ମାନେ ଆଉ ଏଠି ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି କି, तो फोर्स देख छाड़ दीजिए बा तो छाड़ दीजिए मन ताव एटी फोर्स नाही ना, वर्ष ऊपर जाउची फोर्स जदी थांता लगातार पड़ी थांता त से रही न थांता, नेक्स्ट क्वेश्चन रे जाई थांदा एमती चल थांदा एमजी ना, ताने गोटे फोर्स अछि वेट सदाले पडुची, मु एटी छाड़ देछि भाई छाड़ देछि, एटी से एक्सटर्नल फोर्स जदी कोन करता को छाड़ देछि, तो एई जगह रे मु एमजी रो बहुत अधिक फोर्स देली बोले से गला, एबे ताको इग्नोर कर दियो, एबे से एडी अछि ए जगह रे गोटिए फोर्स कोन वेट मते जाउछ कोडे ऊपर जाउछ, तो व्हाट इज द एंगल 180 डिग्री, तो वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द फोर्स ना, बुझिला। अच्छा अच्छा एटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो रीजन की वो कहली पोटेंशियल एनर्जी कैन बी in the form of position, shape, size, एटी position देखो position मैं position जते ऊपर नबो सेति करियो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हम कहबो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो क्वेश्चन पचारिबो एग्जाम रे कोन लिखियो ना, एनर्जी possessed by the body by the virtue of its position, by virtue of its height basically, by position कोन लिखियो by virtue of its position above the surface of earth, energy मोडा एमती लिखुची एते पयगा बिकॉज़ तुमको डेफिनेशन पके दजन बा, possessed by the body by virtue of its position, मतलब क्लियर ये क्लियर। तो एबे मते कथा कह जदी मु एटा को उठेया को चाहूची मु कोन कर चाहूची उठेया को चाहूची आउ उठेया को हेले मते मिनिमम केते फोर्स देबा पड़िबो, mg देबा पड़िबो उठेया पे की लेविटेट करया पे, एबे से लेविटेटिंग मोशन रे अछि कोची की लेविटेटिंग कुछ लेविटेशन एटा काट दे, so now I have given mg and mg side mg केते फोर्स दैछि एबे तो mg दैछि एक देइनी केम यार mg दैछि ना काने mg तळो टाणछु एटा ऊपर टाणछु mg दैछि राइट, एबे मु देउटे इनिशियल वेलोसिटी ताको देइली, now it has some initial velocity, now what is that upward force ना mg ना, तो mg हला mg ପାଇଁ कि अपवर्ड वेलोसिटी अछि ता जे कोन डिस्प्लेसमेंट हला तो मु कहबी भाई mg एच बोली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अछि, बुझि पर बुझि पर अच्छा हला तो एते बुझे कि एटा ऊपर को नबा को हेले मते फोर्स पे जो दबाव पड़े बाकू ता वेट थारो अधिक दबाव पड़े, अच्छा क्वेश्चन एटा बुझ वेट थारो अधिक फोर्स दबाव पड़े, मु जदि को कांस्टेंटली नै कि जेबा को चाहूची ताहाले माने से फोर्स जदि कंटीन्यूअसली मु पकोउथबी ताहाले जदि फोर्स ता मु एटी खाली देली तापर छाडी देली, से एबे जो जाउची ता ऊपर को फोर्स पड़ुची गला गोटी फोर्स पड़ुची सेटा हला कोन mg, और सेई mg जो ही तार वेलोसिटी ता कमुची 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 गोटे पॉइंट रेस्ट रेस्ट बिकॉज़ दैट इज डीएक्सेलरेटिंग इट्स वेलोसिटी, अदरवाइज व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि सेई जो फोर्स तू देइथिलु सेई फोर्स जो को से वेलोसिटी और बढ़ी थांदा इन चल थांदा राइट, बुझी परछु कथाटा, तो एबे मु कहूची कि जदी मु इमितिया भाबो कि मु बहुत धीरे ताको ऊपर को नेकी जाईची कोन बहुत धीरे माने इट्स लाइक
ଲେଭିଟେଟ୍ କରୁଛି ଯେତିକି ମୁଁ ୱେଟ୍ ଦେଇଛି ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ଦେଇଛି ସେତିକି ୱେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ very slowly it is moving upward with initial velocity cycle that is not provided by this force. Then what is the work done by the body? That mgh mg to when the weight को balance है अब खाली gravity जो work done कहते हैं ना mgh मुझे लगा तो तुम मुझे ये पचारिबो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू कोन mgh. Suppose a mass of 4 kg is raised through a height of 5 meters above the ground. Then what is the gravitational potential energy stored in the body? जेति की एनर्जी वर्क डन करे यूज हला सेटा जे स्टोर हे जोता भीतर सेटा केते मो कथा क्लियर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास रे देखबा ए क्लास रे हमर काम होला कि तुम मन को जानियर अछि हमको नेक्स्ट क्लास रे सारिया पडियो कोन कहलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जेमति हले ओके सारले जांकी विल बी एलिजिबल माने सब जो क्वेश्चन करबा हमें सब कांसेप्ट बेसे के हां कोन लेकी वो माने कांगे प्रश्न 1 2 दुटा जगह देखा जगह होनी हां यदि मैंने क्लियर लगा अबे जो कंजर्वेटिव फोर्स को बुझेली जोठी की कोन होथो फोर्सटा मन जोठी पोटेंशियल जेटा स्टोर होथो जो फोर्स पे सेटा हला कोन कंजर्वेटिव फोर्स देख क्वांटिटेटिवली हम से अप्रोच यूज करिया एटा तुमको अंडरस्टैंडिंग पे होथो कोन कि जो फोर्स जोगु पोटेंशियल एनर्जी बॉडी भीतर स्टोर होथो सेटा हला कंजर्वेटिव फोर्स जोठी पे स्टोर होनथिबो सेटा हला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैं केबे तुम एथरे बसछ पुत्र कहलो ए जो मेडा रे बसने सिंगल बस्टर राइट भाभी दे गोटे बॉल टे तू एडी छाड़ीलु से एडू गला एमिति आ गोटे बॉल टे छाड़ीलु से एमिति आसला ताले तू भाबीबू कि ये तो तळु को जाई कि एडी आसला अब ये 8 होई थी आछी ता माने अंक भीतर एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी शुड बी डिफरेंट but it will not be different it will be same why because फाइनली से जोड़ छाड़ी सेठो से जोड़ी पहुंच जी ताकर डिस्प्लेसमेंट ता सेम ही ना दी जण से जो भी बात चाहिए देखिए एको ही हमें करे कि एक्सप्लेन करले कंजर्वेटिव फोर्स को कि वेयर द बॉडीज पाथ ऊपर डिपेंड करे नहीं खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऊपर डिपेंड करे ओके सर्टेन जिनस बुझी परछ मु कोन एग्जैक्टली कहया चाहूची conservative conservative and non-conservative forces but animation yes खाली एटा देखो हमर खाली जे 4 मिनिट रे वीडियोटा अछि एटा खाली देखिबा आ तापर हम क्लास छुट्टी करबा बट तमनकर काम हला कम कहलो तमे ए जो जिनसडा मु आज कहिली ना एटा को let it go inside you understand what I am trying to tell you fine Conservative and non-conservative forces. Objective: to differentiate between conservative and non-conservative forces. We know that work done by a force is equal to the dot now here the force is this way this person is this way f dot ds at the angle अछि force ro cos theta पे की displacement होतो product of force and displacement. Let us look at the work done by two different types of forces, gravitation and friction. Consider an object taken from point A to point B along the curve y of x near the Earth's surface. Let us calculate the work done by gravity when object moves through an infinitesimally small distance d.
dr from a point P on the curve. dr is the sum theta component आसी गोटे x component गोटे y component तो dr I cap और dy j cap 8 होती आसला माने कोन 8 होती आसला 8 होती आसला यार theta component तो 8 होती आसला माने कोन 8 होती आसीबा अब 8 टू डायमेंशनल मोशन रे पढनथले केमति भागी के मोशन रा स्टडी करिया टू डायमेंशनल मोशन रा को थीटा वन डायमेंशनल मोशन रे भागी के स्टडी करिया माने 8 वासी आसीबा जहा 8 एठी आसीबा अब तापर से एठी आसी एका संगे थीटा को मिसै दिला हमको एटा मिलिबो summation of its displacement along the x-axis dx and its displacement along the y-axis dy. Gravity acts along the y-axis y-axis along करछि तो dx ପାଇଁ की किछि अछि हम जदी करबा तले एंगल भीतर एंगल केते हेजिबो f डॉट dx 0 हेजिबो थीटा 90 डिग्री अछि देखो mg आउ dx mg आउ dx भीतर एंगल केते 90 cos 90 ର वैल्यू 0 त माने dx ପାଇଁ की किछि भी हेइ नाही dx ପାଇଁ की मोर किछि भी वक्र हेइ नाही ମାନେ एमिति जिबा ପାଇଁ किछि वक्र हेइ हेइ खाली कम ପାଇଁ ना ए टू एठी जो टेकिली मु सेया तुम बुझिल तो कि हाइट जो केते की एनर्जी स्टोर होछि सेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो केते बड आगु को जाय जो ताप जो ता जो किछि एनर्जी पोजेसिव होबन एनर्जी पोजेसिव खाली ऊपर टेकिया ପାଇଁ एनर्जी पोजेसिव खाली कोन रे ପାଇଁ ताकू तामाने खाली dy ପାଇଁ एनर्जी पोजेसिव काहे या ପାଇଁ तो 0 होई जो this so ता माने एबे तू इमिति देखिता इमिति करके ने इमिति करके ने तू तो सही पॉइंट को टेकिले माने सेति एनर्जी तो को भी बात नहीं एटा ही यार work done by gravity dwg is minus m mg dy dx नो तने 0 cos 90 is 0 x आउ mg भीतर एंगल केते 90 ना 0 g आया एटा ऊपर रे सेटा तळे अछि तो माइनस mg dy dy. The total work done by gravity from A to B is integral of minus mg dy from y1 to y. बाहर पड़िबो y2 minus y1 तामाने दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट माने खाली फाइनल और इनिशियल पॉइंट ऊपर डिपेंड कला पाथ ऊपर डिपेंड कला y2, which is equal to mg into bracket y1 minus y2 bracket closed. Observe that work done by gravity depends on the initial height y1 and the final इनिशियल हाइट y1 एंड द फाइनल हाइट y2 का ऊपर डिपेंड करे तो केमति भी जाय तो से जगह रो हाइट height y2, and that it does not depend on the shape of path taken by the object between those points. So, it can be said that irrespective of the path between points A and B, समस्त करो ऑप्शन का सेम पॉइंट रो सेम पॉइंट क्वेश्चन दी y एक्सिस जदी पॉइंट सेम न थाई अलग अलग था ताहाले जदी हाइट ता सेम था तो सेम ही वर्क देता एमती ये से 8 पहुंचला 8 से 8 पहुंचला 8 से 8 और जदी हाइट सेम अछि ताले वर्क सेम वर्क करे हाइट ऊपर डिपेंड work done by gravity is the same. If the object is brought back to A through another path, as the initial and final positions remain the same, the total work done is 0. Such forces whose net work done in a roundabout motion is 0 ग्रेविटी टा मोर कंजर्वेटिव ना नॉन कंजर्वेटिव ना हमें कोन क्वेश्चन कले हमें ग्रेविटी टा अंडर रे देखिबा केमितिया मोशन होछ खाली ग्रेविटी को फोर्स धरि तामाने ग्रेविटी टा कंजर्वेटिव फोर्स तामाने एटा हम कोन प्रूफ करले कि
Gravitational force is a conservative force. खाली gravity अलगा को force ଆମେ ଜାଣିନେ ଯଦି ସେଇ force ପାଇଁ କି ଗୋଟେ net closed surface ରେ work done zero वाला ତାହେଲେ ସେଟା conservative ଯଦି work done zero ହେଲାନି ତାହେଲେ ସେଟା non conservative ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ଏ ଯୋଉ spring ଟା ଏଟା କଣ ଏଟା ବି conservative କାହିଁକି तो ଏଠି କାହିଁକି possess ହଉଛି energy ର body ନା distance displacement ଯୋଗୁ ମାନେ spring ଟାକୁ ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଣିକି ଏମିତି ରଖେ ତୁ ସେତିକି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବୁ ତଥାପି ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ହବ ଯୋଉ ସେଜା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଯେତିକି ସେତିକି ହବ ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କହୁଛୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେ ବୁଝିପାରିଲ ବଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ ର ସେମିତି ହବନି are called conservative forces. କାହିଁକି କାରଣ ଏଠି ଏନର୍ଜିଟା ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ବଡି ଭିତରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଫର୍ମ ହୁଏ ନନ୍ କନଜର୍ଭେଟିଭ ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟୋର ହବ Work done by a conservative force is independent of the path taken. It depends on the initial and final position only. Gravitational force, spring force, and electric forces are examples of conservative force. Now, let us look at work done by friction in a roundabout motion. Consider an object of mass m that is moved very slowly through a distance d between points A and B in a straight line on a rough floor with coefficient of friction mu. The frictional force that exists between the surfaces is therefore mu mg. Friction, as you know, acts opposite to the direction of motion. Hence, work done by it is minus mu mgd. Now consider another situation where the object is brought from A to B very slowly along a circular path of radius r. Frictional force along the circular curve is mu mg, and it is opposite to the motion of the object at every point. Hence, work done by friction in this case is minus mu mg pi r. ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ୱାର୍କ ଡନ୍ ହବ ଏମିତିଆ କଲେ କମ ୱାର୍କ ଡନ୍ ହେଲା କାରଣ ଏ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଫ୍ରିକ୍ସନ ପଡୁଥିଲା ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣୁଥିଲୁ ବଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନଟା କଣ ଷ୍ଟୋର ହେଲା କି ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଲୁଜ ହେଇଗଲା ନା ସେ ଏନର୍ଜିଟା କଣ ହେଇଗଲା ଲୁଜ ହେଇଯାଇଛି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଥ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ନା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଏତେ ପାଥ ନେଲୁ କି ଏ ପାଥ ନେଲୁ. Though the initial and final points are the same in both cases, work done by friction is different. So, work done by friction depends on the path taken by the object between initial and final points. Irrespective of the path taken to bring back the object to point A, total work done in the roundabout motion is not zero, as friction acts on the object throughout the path ଘଷିକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲୁ ମାନେ ଏଇଠି ରହିବ ନା ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି ଦେଇକି ପେଲିକି ନେଇକି ଯିବୁ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଥାନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଆସିବେ କ୍ଲିୟର କଥା କ୍ଲିୟର ଚलो ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍